Premiere Pro is a software which is used for video editing in industry outside. Yeah, Premiere Pro is a software which is used for your video editing purpose in industry like production house or TV series or ad agencies, etc. Many more. But there is a requirement of video editor. The Premiere Pro is one of the software which is used in very high trending way. Okay, so let's start with the Premiere Pro. Okay, when okay here we have a screen of Premiere Pro over here. Okay, so let's see. What I can show you much more things in that my tutorials. Okay, so let's see. um, we have an option called over here, but जब भी आप Premiere Pro on करोगे we have a option called home. Okay, this is your home panel. Okay, home panel, what do you mean by home panel? home मतलब कहाँ पे सारी चीजें आपको सेट करनी है, right? So here also option same goes with that only कि here we have options called first thing. The first option over here you have here on the left hand side on the home panel, that is your new project, open project, open team project, rush project, and recent file. Many more things you have. Okay, so let's study about one more thing. So what is first thing, your new project? Okay, new project, it means a new start. The things you are going to start anything. Okay, like for example आपको जो भी चीज आपने footage shot लिया हुआ है, shoot किया, सुबह आपको उसका new चीज start करना है. ठीक है, तो that is for your new fresh project. ठीक है, तो जब भी आप कोई fresh project start करो तो you should use with a new project. Okay, so that is the front of your new project. New project means the fresh thing you're going to start. Okay, the next option we have over here down called open project. What do you mean by open project? Open project means it's like to work on your existing project. Like for example अभी सुबह short है, अभी आप edit कर रहे हैं, करते करते you have got tired or you need to go somewhere else. Okay, तो now you need to save that project and go for somewhere. Okay, अब जब आप वापस आते हो you need to again start working on that project only. Okay, for that purpose you obviously you're not going to start with a new project. आपने जो काम किया waste हो जाएगा, right? तो for that purpose we are going to start with the open project जो आपका existing project पे आप काम कर सकते हो. ठीक है, that is the front of your open project. Okay, next thing you have over here called recent. Okay, what do you mean by recent? Recent is like I can say history of the things you're going to know. Okay, the history means like the things you have studied before. Recent, you have worked on the project, so that is your history. That is like for example this is my project names, what I have given that session 1 start, untitled, Zica Borivali, and the last open dates you have. Time also you can say 11 minutes pehle, 13 minutes before, 2 days, 5 days, etc, etc. The size of the project, the formats of the project. Okay, so whatever you see, that's on your home panel. Okay, so for now purpose we are going to start with the fresh only, so we are just clicking on the fresh. So that's on my clicking with new project. Okay, when you're clicking on the new project you're getting one panel, your panel called your new project panel. What does you mean by new project panel? Okay, new project panel means it is like naming, locationing, and the format. What do you want, you can adjust over there. Okay, let's go one by one. You will need to study on that. Okay, but before starting with new panel, okay, I'll just go on my desktop and I'll just make one folder. Okay, I'll just give Premiere Pro. Okay, I have made one folder. Now what, why I did that? Okay, first thing what I did that. Okay, first thing, the name, whatever the name you want to give, you can just give the name. Okay, we are starting, so I'm just giving the start for purpose. The next option you have called location. This location means wherever your project want to get saved. Okay, wherever you want your project should get saved. For example, you want to save in your C drive, E drive, external drive, desktop, or whatever the location you want to define, that is the part of the location. Now you got it. Why I have created a new folder? Because the name I have created on a desktop and the Premiere Pro folder, right? So I just select, so whatever the project I'm going to make it out, we're going to save in my this folder, that is on desktop Premiere Pro. Okay, the next option over here you have journal, scratch, and ingest setting. What these things are that? Okay, let's study on that also now. When you're talking about a journal, okay, so journal matlab kya? Journal is like it's something about the hardware part, I would say. Okay, for example you guys can see here you have some GPU acceleration, here you have some software only. Okay, what do you, the difference between both things, right?
जीपीयू एक्सेलरेशन मीन्स द टोटली रेंडर पार्ट। यू गाइस कैन सी यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है वीडियो रेंडर एंड प्लेबैक, ठीक है। तो टोटली आप जो रेंडर करोगे, प्ले करके देखोगे, दैट इज डिपेंड अपॉन आपको किसके सपोर्ट पे देखना। दैट इज जीपीयू मतलब जो भी ग्राफिक कार्ड जो भी आपके पीसी में मशीन में होगा उसके बेस पे देखना है, या जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रेंडर होता है आपको वो करना है। तो दैट इज ओनली टू डिफरेंट थिंग्स वी हैव ओवर हियर, राइट। दैट इज जीपीयू बेस्ड रेंडर और द सॉफ्टवेयर बेस्ड रेंडर, दैट्स ऑन योर चॉइस. GPU based render is used for your heavy footages, like when you're working with the 4K high front footage. That time you require the GPU based render. And normal footages like normal short videos you want to create without it, so you can just go with the software only. It doesn't make the file heavy also, and it makes it quite simple. Okay. The next option down you have, that is your video, audio, and capture. What do you mean by these three things? Okay. And in the things you got in the display, right? The display format of video, the display format of audio, the capture format of capture. Okay. What does this thing? Okay. When you're clicking on the time code option, you are getting the four options. That is the time code, feed frames, and the frames. Okay. What are they? Uh, when you are editing something, especially I'm talking about a video only, visuals only, shots only. Okay. When you're editing something, तो दैट इज अ थिंग कि यू नॉट से कि जहां तक शाहरुख खान दिख रहा है वहां पे कट मार देना, फिर जब जूही चावला आएगी तब अपन उसको नया शॉट देंगे। वी कांट डू दैट थिंग, राइट। देयर इज ऑप्शन कॉल्ड टाइम बेस। वी आर वर्किंग विद अ टाइम कि कब तक वो टाइम रहेगा। यू वांट टू कट द फुटेज फॉर 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minute or 5 minute, whatever the duration required. That's the reason we are requesting the time code, because the display format of the video will be in your time base, like this in second base, in frame base, not right. That is the reason. Frame base, when you're talking about, don't show you the time, show you the frames, like जो पुरानी पिक्चरों के रील में होता था ना, like frame by frame by frame हम देखते थे, right? That is a funda. So I always suggest, and I used to work also personally experience के साथ, that I used to go with the time code only. And what are the feet and frame? Definitely I'm going to explain. जब उसका requirement आएगा, I'm going to explain. तो फिलहाल के लिए time code and frame is the most understanding thing. I just know. नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड योर ऑडियो पार्ट। ऑडियो डिस्प्ले फॉर्मेट मतलब आपका ऑडियो कौन से फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए, राइट। तो वो दैट इज अ वन थिंग, दैट इज ऑडियो सैंपल्स एंड मिली सेकेंड्स, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय ऑडियो सैंपल्स, मतलब अब ऑडियो को हम कभी भी देख के एडिट नहीं करते। द ऑडियो पार्ट, द ऑडियो इंजीनियर्स, व्हाटएवर यू से, वो ऑडियो को सुन के एडिट करते हैं, हेडफोन्स और लाइक मेगा मेगा स्पीकर्स एक्सेट्रा, राइट। तो दैट्स द रीजन कि आपको आपका ऑडियो किस बेस में देखना है। ऑडियो सैंपल्स मीन द वेव फ्रॉम यू आर गेटिंग, दैट वो वेव वाला आता है। ऑडियो कैसा दिखता है, हम बोलते बचपन स्कूल में पढ़ा करते थे वेव फॉर्मेट वाला, राइट। तो दैट इज ऑडियो फॉर्मेट, ऑडियो सैंपल। डेफिनेटली जब स्क्रीन पे आएंगे आई विल शो यू दैट ऑल्सो। एंड मिली सेकेंड में टाइम बेस पे, कि आपका जो ऑडियो होगा टाइम बेस पे होगा, टाइम बेस पे विजिबल होगा उसके बेस पे, ठीक है। तो 1 second इज योर चॉइस, बट स्पेशली इफ यू आर आस्किंग मी, तो आई एम गोइंग टू यूज द ऑडियो सैंपल्स ओनली, दैट्स द थिंग। द नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव ओवर हियर कॉल्ड कैप्चर फॉर्मेट। what do you mean capture form? In simple language मैं आपको explain, एकदम simple language बोल रहा हूँ भाई। that is your screenshot, okay, that is your screenshot। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, इंटरनेट पे, है ना, उसमें से कोई स्क्रीनशॉट निकाल कर, स्नैपशॉट निकाल के फोटो भेजते हैं ना, दैट इज अ थिंग ओनली कॉल्ड यू कैप्चर। कि आपका जो कैप्चर होगा वो कौन से फॉर्मेट होगा, डिजिटल वीडियो और हाई डिजिटल वीडियो, दैट इज अ थिंग यू हैव ओवर हियर, ठीक है। तो आप जो स्क्रीनशॉट लोगे कौन सी क्वालिटी में आना चाहिए, दैट्स अ थिंग, ठीक है। एवरीवन इज रेडी, बट ऑब्वियसली अगर उनका फुटेज डिजिटल भी होगा तो भी हाई डिजिटल ही सेव कर लेते हैं लोग, पता नहीं क्यों, ठीक है। That's the thing. The next option after the journal, you have the option called scratch disk. Scratch disk means the things, everything where you going to save that. जैसे अभी हमने वहाँ पे कैप्चर वीडियो, ऑडियो पाथ, लोकेशन पाथ जो सब सेव किया ना, अभी देखा हमने, वो सारा कंटेंट अभी तो हमने सेव किया हुआ है किधर, डेस्कटॉप प्रीमियर प्रो में, राइट। बट वो अगर आपको अलग अलग पाथ में चाहिए कि आपका जो कैप्चर किया हुआ वीडियो है, कैप्चर किया हुआ ऑडियो है, वीडियो प्रीव्यूज है, ऑडियो ऑटो प्रोजेक्ट सेव कहाँ होना चाहिए, ये सब आप अलग अलग ब्राउज करके लोकेशन दे सकते हो। बट इफ यू डोंट रिक्वायर, इफ यू डोंट वांट दैट, यू कैन जस्ट सेव सेम एज प्रोजेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन होता है सेम एज प्रोजेक्ट, मतलब आपने जो आपका प्रोजेक्ट सेट किया है दैट इज डेस्कटॉप पे प्रीमियर प्रो नाम के फोल्डर में, सब कुछ वहीं पे सेव होगा। दैट इज वेरी गुड थिंग। हमेशा यही काम करो कि सेम एज प्रोजेक्ट ही रखो आप लोग, ठीक है। बिकॉज अगर आप उसको कहीं और लोकेशन दे देते हो तो इट विल बी लाइक, जब आपको फोल्डर कैरी करना पड़ेगा तो वो सारी फाइल मिसिंग हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन सेम एज प्रोजेक्ट, ताकि फाइल मिसिंग नहीं होगी तो आपको एरर नहीं आएगा। बिकॉज एक बार फाइल मिस हो गई ना बॉस, बहुत खतरनाक लॉस होता है, मुझे पूछो। दैट्स द थिंग। The next option you have over called inject setting, ठीक है। inject setting is definitely I'm going to explain not now because the reason is अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ज़्यादा टेक्निकल जाएंगे तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सॉरी, अभी हम यहाँ पे सिर्फ जर्नल स्क्रैच के बारे में देखिए। वंस यू आर डन विद दैट, ठीक है, जस्ट से ओके बटन, ठीक है। व्हेन यू आर डन विद द ओके बटन, ओके, या दिस इज योर फॉर्मेट कम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मेट बेसिकली, ठीक है, कि आप
कैसे क्या करने वाले हो, ठीक है। इंटरफेस ऑफ योर प्रीमियर प्रो, दिस इज, यू गाइस कैन सी द फोर पैनल्स यू हैव, द अपर मेनू लाइन यू हैव। लेट्स स्टडी अबाउट द इंटरफेस कि इंटरफेस में हमारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, ठीक है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस द ऑप्शन कॉल्ड प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट का नाम जो स्टार्टिंग में रखा था, स्टार्ट रखा था, यहाँ पे भी वही लिख के आ रहा है, राइट। तो दैट्स द थिंग कि जो भी आप नाम रखोगे वो प्रोजेक्ट पैनल में होगा। व्हाट इज प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। प्रोजेक्ट पैनल मीन्स the things, अगर मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ इन एग्जाम्पल फॉर्मेट में, इट इज लाइक वी हैव टू थिंग्स। एक शॉप को अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो शॉप का जो गोदाम होता है जहाँ पे वो अपना सारा कंटेंट रखता है वो अलग होता है, और जो शॉप होती है जहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले वाला माल रखता है, राइट, वो एरिया अलग होता है। तो प्रोजेक्ट पैनल इज योर कंटेंट थिंग कि जहाँ पे आपका सब कुछ स्टोर होगा, आपका ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड मोशन ग्राफिक्स, whatever द पार्ट होगा वो आपका यहीं पे आके सेव होगा। तो दैट इज द रीजन प्रोजेक्ट पैनल लाइक योर गोदाम, जहाँ पे आपका सारा कंटेंट होगा। और फिर प्रोजेक्ट पैनल से हम चूज करके लेके आते हैं शॉप में, मतलब हमारे एरिया में जहाँ पे हमें एडिट करना है, जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट पैनल में सारा चीज सेव कर लेंगे, उसके बाद जो कंटेंट आएगा टाइमलाइन के अंदर, वो होगा आपका एरिया जहाँ पे आप अपने वीडियो को कट शॉर्ट, एडिट और नॉन लीनियर रीडिंग जिसको हम बोलते हैं कट शॉर्ट करना, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को यानी वीडियो और ऑडियो को एडिट कर सकते हो। अब जैसा मैंने बताया था, आप ऑडियो को तो सुन के एडिट कर लोगे, बट वीडियो को देख के एडिट किया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ टाइम कोड बेस, आई होप यू रिमेंबर टाइम कोड, कि हमने वहाँ पे टाइम कोड दिया तो सिर्फ टाइम बेस दिखाने वाला टाइम लाइन में। तो एक्चुअल में विजुअल कहाँ दिखाएगा, एक्चुअल में विजुअल ठीक इसके ऊपर वाले पैनल में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट पैनल, सॉरी प्रोग्राम पैनल, ठीक है। तो प्रोग्राम पैनल में गोइंग टू शो यू ऑल द वीडियो विजुअल्स जो भी आप यहाँ पे डालोगे। तो इट इज लाइक वन कनेक्टेड थिंग, प्रोजेक्ट पैनल में आएगा, उधर से टाइम लाइन में आएगा ताकि आप एडिट करो, और जो भी आप एडिट करो उसको देखने के लिए नीड टू गो टू प्रोग्राम पैनल। तो दैट इज द थिंग यू हैव ओवर हियर, ठीक है। अब द थिंग वी हैव नेक्स्ट थिंग, सोर्स पैनल, ठीक है। सोर्स पैनल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम, बट फिलहाल के लिए नहीं, जस्ट दिस थिंग वी हैव, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग you have over here called your tools. Some of the tools you have for the cutting, moving and slow down text format tools you have. One by one we are going to use everything, okay. And the upper menu line after the tool, this is called your menu line, ठीक है, जहाँ पे हम अपने फाइल में जाके वर्क, सेव एज, सीक्वेंस, मार्कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी मोर थिंग्स वी हैव, ठीक है। अब इसके बाद यू हैव समथिंग ओवर हियर कॉल्ड इंटरफेस पैनल, ठीक है। इंटरफेस मतलब कि आपका जो इंटरफेस है वो आपको किस वे में देखना है। अभी आप देख सकते हो कि ब्लू कलर हाईलाइटेड है, दैट इज एडिटिंग, मतलब हम अभी एडिटिंग मोड में, मतलब जो भी चीज ब्लू कलर से हाईलाइटेड होती है वो सिलेक्टेड होती है इन प्रीमियर प्रो और इन आफ्टर इफेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, इसमें से अगर मुझे बताना कौन सा एरिया सिलेक्टेड है, डेफिनेटली आई कैन से प्रोग्राम पैनल, बिकॉज ये ब्लू कलर के बॉर्डर से हाईलाइटेड है। और जो ये है ऊपर, दैट इज वन थिंग कॉल्ड editing panel, because we are working with the editing panel, okay. Up what are the color effects, audio, अब as I told you कि Premiere Pro have multiple departments like video editors, audio editors, motion graphics, color correction and etc, right। तो for that purpose उनके layouts यानी interface जो होते हैं वो भी अलग होते हैं, कि उनको सारा ऑप्शन जो होता है कलर करेक्शन का, आर्टिस्ट का, वो सारा ऊपर दिख जाए तो इजीली होता है, सर्च करना नहीं पड़ता। तो दैट इज द थिंग। इफ आई एम गोइंग विद द कलर पार्ट, सी, जस्ट क्लिक ऑन दैट। नाउ यू गाइस कैन सी यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर का एक ऑप्शन ऐड हो गया है, राइट। थोड़ा सा ये श्रिंक वगैरह भी हो गया है कि प्रोजेक्ट पैनल थोड़ा छोटा हो गया, टाइम लाइन इधर आ गया, बट एक ऑप्शन ल्यूमेट्री कलर का वो मुझे सामने आ गया ऑन स्क्रीन लेआउट। तो दैट इज द थिंग। इफ आई एम वर्किंग विद द इफेक्ट्स पार्ट, यू गाइस कैन सी कि अब सारे इफेक्ट्स के ऑप्शंस मेरे ऊपर आ गए, राइट, एवरीथिंग है। इफ आई एम वर्किंग विद ऑडियो पार्ट, आप देख सकते हो कि एसेंशियल साउंड का ऑप्शन आ गया, ऑडियो मिक्सर, ऑडियो ट्रैकर, ऑल द थिंग्स विद रिलेटेड टू ऑडियो ऑन माई स्क्रीन, ठीक है। इफ आई एम वर्किंग विद द ग्राफिक्स पैनल, तो सी ग्राफिक्स में सारा कंटेंट मेरे पास सामने आ गया, तो दैट इज वन थिंग, ठीक है। अगेन आई वांट टू कम बैक विद द एडिटिंग पैनल, अच्छा। अब इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। हाउ द वे यू डू कस्टमाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट पैनल थोड़ा बड़ा करना है, टाइमलाइन पैनल थोड़ा ऊपर करना है, टूल्स आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहे, प्रोजेक्ट पैनल आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दो, तो इट्स ऑन एवरीथिंग, ये आपको यहाँ पे रखना है, टाइमलाइन आपको यहाँ पे रखना है, तो एवरीथिंग मैंने थोड़ा सा मेसी कर दिया, इट्स बट टू शो कि आप हर एक चीज को कहीं भी उठा के रख सकते हो अपनी स्क्रीन में। तो दैट इज वेरी गुड थिंग ऑल्सो फॉर यू एंड मी ऑल्सो, ठीक है। अब थिंग इज दैट अब ये बहुत सारा मैस हो गया है, अब मुझे इसको वापस से रीसेट करना। हाउ डू आई रीसेटिंग, मतलब जो पहले जैसे नॉर्मल, जैसे बैक टू नॉर्मल हो जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज फॉर वेरी इजी थिंग। जैसे हमने एडिटिंग पैनल में काम करे, तो व्हाट यू नीड टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट एडिटिंग पैनल, इट विल हेल्प यू confirm workspace reset. Yes, I will say yes simply, and everything going to be reset simple format. Or else there is one more thing we have, that is on the upper menu line in Windows, the workspace,
and all the things, the editing effects, graphic, and with the shortcuts you have, to reset, save changes, save new workspace, whatever you see, we are getting over here. So that was something very much easy for you guys to understand about interface and to study about the things. So that was about your Premiere Pro first session, that is on interface. Okay, so how to start a new project with interface. Thank you so much.